Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 17 of statistics. In the previous lecture we had just started chapter number 2 linear correlation and we had learned the meaning of linear correlation. Yes or no? So unit 2 I'm talking about the linear correlation. Okay, so those methods we had learned in the next previous lecture and the methods of studying correlation also done. So let's see the first method. The name of method is scatter diagram method. I'm just giving you the overview of this by explaining the different type of correlations. How many types are over there? So 5 types: perfect positive correlation, partial positive correlation, perfect negative correlation, partial negative correlation and lack of correlation. सी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है? अगर आप अच्छा यहाँ वेरिएबल की बात कर लेते हैं. वेरिएबल जो है, पहले वेरिएबल को हम x कहेंगे और दूसरे वाले वेरिएबल को y कहेंगे. जैसे कि अगर यूँ कहें कि रेन इन सेंटीमीटर एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन टन क्विंटल वट एवर इट इज. सो सेंटीमीटर हमारा एक वेरिएबल हुआ और दूसरा जो प्रोडक्शन है 10 क्विंटल वो हमारा दूसरा वेरिएबल हुआ. अगर हम बात करें जैसे कि समर, तो समर के लिए हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर. सो टेम्परेचर हो जाएगा हमारा x और उसके साथ में रिलेटेड जो भी है सेल ऑफ आइसक्रीम, सेल ऑफ एयर कंडीशनर, वो हो जाएगा y. तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स की. पहले वेरिएबल को हम कहेंगे x और दूसरे वाले वेरिएबल को हम कहेंगे y. ओके, सो नाउ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आप x और y वेरिएबल को इस तरह से ग्राफ में शो करते हो, ठीक है, इफ़ यू आर शोइंग इट इन अ प्रॉपर ग्राफ and if the points plotted on the graph are showing upward direction from left hand to right hand, see, make it clear. If it is showing upward direction from left hand to right hand in a straight line, तीन चीजें हैं क्या? which hand to which hand? Left hand to right hand. Which direction? Upward direction. Which line? In a straight line. If it is in a straight line, then it is said to be perfect positive correlation. Perfect positive correlation. I am explaining it again. By plotting the points of x and y in the graph, if points shows left hand to right hand upward direction in straight line, that is called perfect positive correlation. So hopefully you have got what is perfect positive correlation. Let's move to the next, partial positive correlation. So partial positive correlation is what? So partial positive सेम ही है, लेकिन ये जो मैंने कहा ना, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा ग्राफ का. वो लाइन जो है वो फ्लक्चुएटिंग होगा. मतलब वो उसके पॉइंट्स जो है इस तरह से छितर बितर होंगे. आप डायरेक्शन पता कर पाओगे बट वो स्ट्रेट लाइन जो है वो पता नहीं कर पाओगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक लाइन के आसपास में है. तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? सो इफ़ ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन. डायरेक्शन सेम है, left hand to right hand upward direction, not in a straight line, that is called partial positive correlation. Move to the next, perfect negative correlation. Negative correlation क्या है? सेम है, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड. अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, perfect negative correlation. If point plotted on the graph are shows from downward direction from left hand to right hand in a straight line, it's called perfect negative correlation. In the next, partial negative correlation. What is partial negative correlation? Same definition but not in a straight line. So if points plotted on the graph paper shows downward direction from left hand to right hand but not in a straight line, it's called partial negative correlation. And last is lack of correlation. जब आप डायरेक्शन ना पता कर पाओ कि इसके पॉइंट जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे लैक ऑफ कोरिलेशन. जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हो, इस ग्राफ में आपको पता चलेगा इसकी डायरेक्शन हम
डिसाइड ही नहीं कर सकते ये कहाँ जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्या, लैक ऑफ कोर रिलेशन। सो होपफुली आपको जो फर्स्ट मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।